Hello, good morning, children. Hello, how are you all? I hope you all are safe, healthy, and happy at home. Are you washing your hands? Remember, you all have to wash your hands regularly. So, today I have come to teach you something new. Do you want to learn? Okay, today I'll teach you heavy and lightweight. What is the difference between heavy and light? You know, heavy means bhari and light means halka. चलिए, I'll show you something. See, children, here are some objects. Can you see a bottle? Then you can see some stones over here. Stones. Here is a book. Here is a box. There are something in it. Now here also you can see this is a bottle. Then this is again a box, a cotton and a paper. You know, they are similar things, but there is difference. Now this bottle is very heavy. Why? Because it is full of water. It has got water inside, so it is very heavy. But this bottle is very light. This pink bottle is very light, you see, because there is no water in it. It is empty bottle. You can see there is no water. So this is light. Now again you can see this box. This box is very heavy. Why? Because there are things in it, you can see. So this is very heavy. And same, this is another box. But this is light. Why? Do you know? आपको पता है ये हल्का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है. ये खाली बॉक्स है. So this is light. Now you can see these stones. ये देखिए, ये पत्थर. This is heavy. So जो भी भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे की ओर जाती हैं, है ना? This is heavy. And this is cotton. दिस इज़ रुई. ये तो रुई है, ये तो बहुत हल्की है, तो ये ऊपर चली जाएगी. सो हैवी थिंग्स गो डाउन एंड लाइट थिंग्स गो अप. इन द सेम केस यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस इज़ अ बुक. इट हैज़ गॉट सो मैनी पेजेस, सो इट इज़ हैवी, है ना? दिस बुक इज़ हैवी. एंड you can see a paper over here. Here is a paper, but this paper is very light. It is one single paper. It is light. So this is light and this book is heavy. So heavy things need energy. हमें इसमें थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है ना? जब हम इसको उठा रहे हैं तो ये मुझे भारी लग रही है, थोड़ी सी मेरी मेहनत लग रही है, एनर्जी लग रही है इसमें. बट दिस इज़ लाइट. इसको मैंने आराम से उठा लिया. तो these are the heavy things and these are light things. You can also go around in your house and bring two things that are heavy and light. आप अपने घर में जाइए, देखिए, कुछ एक भारी चीज़ लेके आएंगे and one light. Now see children, this is coconut. It is so heavy. I can't lift it. है ना? This is heavy. This coconut is heavy, but this pomegranate, this anar, you can see it is so light. It is easy to hold it, है ना? It can go up also with one hand. So this is the difference. This is light and this coconut is heavy. It needs energy.
So children, today I am going to tell you about heavy and lightweight. Now how you can measure? You can make your own balance. See, I have used a hanger and two cups, and I have made my own weighing balance. Now I am going to show you how lightweight and heavy weight you can measure. See, I am putting a cotton and then I am putting a stone. Now see what happens, children. The glass with stone goes down, and the glass with cotton, it rises up. So which one is heavy, children? Can you guess? Yes, this side with a stone, the glass with the stone is heavy, and the glass with cotton is light. Now I am going to put a pencil. See, I put a pencil and it has gone down. And this side I am going to put a pen. Now see what happens. The pencil one, it goes up, and this pen goes down. It shows that this pen is heavier than this pencil. ये भारी है तो ये नीचे चला गया, और ये पेंसिल हल्की थी तो ये ऊपर चला गया. तो ये आपका वेइंग बैलेंस ये शो करता है. जो भारी चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर जाती है. Now see children, I am putting a spoon. See, and here I am going to put a matchbox. Now what happened? See what happened? क्या हुआ देखिए. जो स्पून है, जहाँ स्पून है वो नीचे है, और जिसमें मैच बॉक्स है वो ऊपर है. तो दिस शोज दैट द स्पून इज हेवी दैन द मैच बॉक्स. दिस इज हेवियर, दिस इज लाइटर. Now see children, now I am going to put equal same pen. See what happens now. I have put a pen over here and a pen over here. Now what happens? Both the same pens have same weight, and so you can see that they are showing same weight. They are of same weight. ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों का weight सेम है. So this is, they are having same weight. There is no difference between the pen. अगर हम सेम वेट का पेन्स लेंगे, है ना, ये दोनों पेन सेम वेट है, सेम साइज, सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम, तो वेइंग बैलेंस में कुछ नहीं शो करेगा, ना ऊपर नीचे, दोनों एक बराबर रहेंगे. यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, लाइक आई एम गोइंग टू पुट वन पेन ओवर हियर and the same pen I am going to put over here. What happens? You can see this is straight. ना ये इधर झुक रहा है, ना ये इधर झुक रहा है. तो it means कि both the pens have got same weight. दोनों पेन का वेट सेम है. अगर कोई चीज़ सेम वेट की होगी तो वेइंग बैलेंस आपको सेम शो करेगा. अगर हैवी है देन दैट थिंग विल गो डाउन. जैसे अगर मैंने इसमें इरेज़र डाल दिया तो ये हैवी हो गया, तो ये नीचे चला गया, आप देख सकते हैं, और ये पेन ऊपर चला गया. वेइंग बैलेंस भी थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, एक ये नीचे चला जाएगा और एक ये ऊपर चला जाएगा. मैम मुझे भी अपना वेट लेना है. आई वॉन्ट टू सी वेदर आई एम लाइट वेट और हैवी वेट. चलिए मैं आपको पेन के साथ कंपैरिजन करती हूँ. See, this is a pen and this doll is going to sit here. See. Now what happened? Nothing happened. Means pen तो नीचे था पहले से. So pen is of heavy weight and this doll is of light weight. You can see. जो पेन है वो नीचे है क्योंकि वो heavy weight की है, और वो जो doll थी वो ऊपर है because it is light weight. Now see children, I'll put an eraser. Eraser I have put here.
it goes down, and I'll put one cello tape over here. Now what happens? The eraser is heavy, so it has gone down, and the cello tape stands over there only. सो सेलो टेप जो है वो हल्का है और इरेज़र हमारा जो है भारी है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैवी एंड लाइट. सो व्हाट हैव यू लर्न चिल्ड्रन टुडे? लाइट एंड हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स. यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन वेइंग बैलेंस एंड यू कैन ऑल्सो शो इट टू मी. आप भी इस तरह से कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं और चीज़ों को नाप के तौल के देख सकते हैं कि क्या हैवी है और क्या लाइट है. मैम ये हैवी डॉल और मैम ये लाइट डॉल. गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज सौर्य चौबे. I have two things, ball and cork. The ball is heavy, the cork is light. This is very light bird and this is very heavy pencil box. Thank you. Ma'am, this box is heavy. This pencil is light. This is a heavy book. This is a light teddy. दिस इज हैवी, दिस इज लाइट. ये जो कॉटन है इसको हम आसानी से उठा सकते हैं और ये जो बुक है इसको हम एनर्जी से उठाएंगे.